jurisdiction, دوسری طرف اس کا jurisdiction آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ 2 لاکھ کا جرمانہ کیسے لگا رہا ہے؟ یا پھر آدھا jurisdiction وہ لے گا سول کورٹ اور باقی آدھا jurisdiction. قانون جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے، اور میں نہیں کہہ رہا یہ قانون پچھلے 100 سال سے ہے، اور وہ قانون یہ ہے سر، وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کوئی جورسڈکشن دینی ہے، کوئی اختیار دینا ہے، کوئی طاقت دینی ہے، تو پھر ایکسپریسلی اس کو کریں گے، امپلیکیشن سے نہیں ملے گا. You are not coming to section 2 and 5. I will say 209 پڑھ رہا ہوں ابھی میں. And we are bound by the law because section 205 is not 209 آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But تو now الیکشن کو کمیشن کو تو اختیار the ہے. constitution of your own party کہ یہ اس کے مطابق ہوئے کہ نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے میڈم؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 209 کے تمام یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ تو میں نے دینا ہے، یہ سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ نے دینا ہے، یہ پارٹی نے دینا ہے. It is not to be given by the election. یہ ایسی بات ہوگی پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے، کھیلیں گے تو نہیں، ریفری کا سرٹیفکیٹ آ گیا، پاکستان جیت گیا. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے. I will move on to the next submission, but my point on this, I will read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے، آپ نوٹ کر لیں. کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو jurisdiction نہیں just تھی. understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی non compliance 215 میں mention ہے نا. If you will read 215 پڑھ لیتے ہیں نا، پڑھ لیں. jurisdiction issue ہے. ختم تو کر لوں 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے. 209 وہ ختم کر لیتے ہیں نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ کس پہ؟ ہاں یہ کون سے پیج پہ؟ یہ ابھی پیج نمبر ہے میرے پاس نوٹ ہے. کدھر ہے؟ کون سے پیج؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn to page 65. 66 ہے. 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر، پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف، کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. نہیں certificate is at page 68. 66 پہ ہے. ہاں وہ پڑھ. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. ایک سیکنڈ جی. اب آپ یہ ذرا ڈیٹ نوٹ کیجئے. یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو آر وائلیٹنگ یور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. پہلے ہی اس میں 17 18 19 20 21 22 وہ کہتا ہے 5 سال میں کم از کم 5 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. آپ کا آئین کہتا ہے کم از کم 2 سال میں چیئرمین اور 3 سال میں باقیوں کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلا آپ کا تو آپ نے وائلیٹ تو کیا ہے. اب 2 پہ آتے ہیں. جی. لاسٹ ڈیٹ آف انٹرا پارٹی الیکشن 13/6. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا الیکشن کمشن نے کہ آپ 13 سے پہلے وہ ان کو چھوڑیے نا، مگر یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے نا. اب 2 پہ پڑھیں. 5 سال ایکچولی 13/6 میں ہی ہوتے ہیں، 15/6 میں. تو 5 سال سے پہلے کرا دیا نا. صرف 5 سال ہوتے تھے. 22 کو ہوگا نا جی. 13/6 اگر گریں 17 18 19 20 21 22 13/22 کو ہوگا نا سر. 12 جون 2022 کو کرا دیے نا 3 دن پہلے بفور دا ڈیٹ. اگر آپ یہ اس کو خود نہیں مان رہے اس الیکشن کو. نہیں وہ ہم مانتے تھے، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. پہلے آگے بڑھتے جی. تو یہ ہم نے نہیں وائلیشن کی، وہ ہو گئی. لیٹ اس move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. یہ کر دیا. The election results including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. یہ بھی ساتھ لگایا. لگا ہی نہیں سکتے نا. اب یہ نہیں لگا سکتے کہ سارے انپوز ہیں. سارے انپوز ہیں تو ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. ایک منٹ دیکھیے، جب انپوز آ گئے ہیں تو ووٹ کیسے کاسٹ ہوں گے؟ ووٹ جب کاسٹ ہوں گے. دیکھیے یقیناً 2-4 لوگ آگے لکھ دیا. دیکھیے علی ظفر صاحب
बड़े बड़े ओहदों पे सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं, ठीक है, वो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े या कोई कर ले, मगर जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से। अगर छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है कि वहां भी जब कोई नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, आपकी अनकंटेस्टेड हो सकता है इलेक्शन, अनकंटेस्टेड इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस भी अनकंटेस्टेड होते हैं, मगर मुझे कोई ऐसा सेक्शन 73 एक सेकंड अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी, जैसे भी हुए हैं, जितने जबरन भी हुए हैं, जैसे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है पार जेड बी की, मगर कोई अगर आप टोटल इलेक्शन देख लें तो उसमें 2-3% शायद होंगे अनअपोज्ड, ठीक है जी, वो उनके मखसूस लोग हों या जो भी हो वजह से शायद जेन्युइनली अनअपोज्ड हों, ठीक है, मगर अगर एक इलेक्शन हमारे सामने आ जाए कल, ये सारे हो गए पाकिस्तान के 326 हैं शायद नेशनल असेंबली के मेंबरान, सब हो गए अनअपोज्ड, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा। मतलब देखिए वही टेस्ट, हम आप पे कोई ज्यादा टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, अब छोटे से छोटा पोस्ट भी आपका वो भी अनअपोज्ड आ रहा है, तो देखिए इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। सर अब ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता। छोटा इसके साथ ही है, कल हमें आपकी तरफ से एक वो मिला था पॉइंट के बहुत सारे लोग जमा थे चमकनी में, जो कि बहुत एक छोटा सा साथ में पेशावर के अटैच्ड एक एरिया है, नॉर्मली इतना सिक्योर तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे, तो जब इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? देखें जी, मैं आपको जरा पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा सीन बता दूं। क्या उनको वहां पे पता चला कि इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, वो वोट देने आए, लेकिन आगे से पता चला कि अब आपने जो ये सवाल पूछा मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी नाउ पुट इट बिफोर द कोर्ट। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ वेरी बिग लीडर, एक लीडर है जिसको फॉलो लोग करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबरशिप के लिए आते हैं। पीटीआई हैज वन ह्यूज लीडर विच इज इमरान खान। अब वो जो इमरान खान साहब हैं, वो जब किसी को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये पैनल है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसको अपोज नहीं कर सकता, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द लीडरशिप जो एक वर्कर को या एक मेंबर ऑफ अ पार्टी को होती है फॉर द लीडर, नोबडी प्रॉब्ली अपोज दैट। नाउ वी कैन नॉट इंसिस्ट। खुद ही लफ्ज लिख दिया प्रॉबेबली जी, आपने तो अपना ये स्टेटमेंट ही खत्म कर दिया प्रॉबेबली ऐड करके जी। तो अब नहीं, अगर देखिए एक तो ये तरीका है आपने खुद खत्म कर, अगर सॉरी जी, फिर ये जमहूरियत नहीं है जी, फिर ये आमरियत है। नहीं, अगर नहीं सॉरी, नेचुरली कुछ हो सकते हैं कि यार ये प्रेसिडेंट है, ये इसको ना करो, मेरी बात मान लो, मगर अगर आप कहें कि वो जबरन कर रहा है किसी से, जबरन हो रहा है ना, क्योंकि 14 लोग हमारे सामने कि जी हमें इलेक्शन तो लड़ने दें, हम हार जाएं बेशक, उनका जो प्रूफ है, उनका जो एविडेंस है वो मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक सेकंड के लिए अज्यूम करें, वो दिखाइए हमें, अज्यूम करते हैं एक सेकंड के लिए, दिखाएं पहले ना, इस बात को खत्म कर देना, एक सेकंड के लिए जरा सा पढ़ लीजिए ना, क्योंकि वो पहले अज्यूम से मेरा जवाब तो देने दीजिए, अज्यूम कर लीजिए एक सेकंड के लिए कि कोई नहीं आया, जेन्युइनली नहीं आया, दैट डज नॉट मेक द इलेक्शन void, क्योंकि आई कांट नहीं, आई वुड नॉट, आप उसको void कह रहे हैं, मैं उसको इलेक्शन का दर्जा नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन जैसे कल आप इलेक्शन 8 फरवरी को रिजल्ट्स ले आइए जी, ठीक है, 326 का मैं अनअपोज, मैं उसको इलेक्शन नहीं मानूंगा, जो मर्जी हो, लीगली तो इलेक्शन है, मगर थोड़ी सी अकल और दानिश भी कोई चीज होती है। करेक्ट, हो सकता है 8 फरवरी को ये 326 हो गया ना पोस्ट, सब बाकी कैंडिडेट्स को उठा करके सरकार पकड़ ले अपने घरों में। मेरा पॉइंट नहीं ठहरिए ना, ऐसे अगर होने लगा ना, ये फिर देखें हम पूरी जमहूरियत पे चलेंगे, आधी पौनी लंगड़ी लूड़ी अब खत्म हो गया है, बहुत हो गए हैं चीजें। पॉलिटिकल पार्टीज में भी जमहूरियत आना चाहिए, आपके लोग अपने लोग कह रहे हैं हमें इलेक्शन लड़ने दो, बस इतनी सी बात है। आपको उनका शक्ल बुरी क्यों लगती है? सिर्फ उनको एक दो ले भी गए तो क्या मसला हो जाएगा? वो तो खैर जो भी कह दे, कोई उठ के आके कह दे, या तो आप लोग कहें वो कोई गैर आदमी है, दूर से सड़क पे चलता आ रहा है, बिल्कुल गैर आदमी लगा हुआ है आपके पीछे, मेंबर्स नहीं है, लेकिन उनको हमने किसी को रोका नहीं। कल हामिद खान से वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है सर, वो भी पता चल गया। पता क्या चल गया? क्या चीज? He has got more stature than you. Of course, I am nobody sir. मैं तो when did you join the party? मैं तो when did you join the party? मैं तो बहुत recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gore join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before?
I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not आपसे in नहीं any पूछ रहे party. ना, आप देखें पर्सनल ना हो ना, आप तशरीफ रखें ना, या तो क्या मैं अपना केस आर्ग्यू करूंगा जी. I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. कोई पार्टी में थे आप? 2009 से 22 तक पार्टी में नहीं था, उससे पहले पीपल्स पार्टी में था, इलेक्शन कंटेस्ट किए थे. जी जी, वो कह रहे हैं कि मैं एक जमाने में पॉलिटिकल पार्टी में होता था. नाम बता देना. पीपल्स पार्टी में. तो अकबर अहमद साहब ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, बता दें. हमारा कभी नहीं. सर आप उनको देखिए इसी को कहते हैं टॉलरेंस, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कम से कम बर्दाश्त तो रखें. उनको पार्टी डिसिप्लिन के तहत टर्मिनेट कर दिया हुआ है सर 2018 में. अब दिखाएं, मैं बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, दिखा दें. मैंने भेजा है, दिया है सर, इधर डॉक्यूमेंट आप भेज दिए. दिखाइए ना, ये तो हम कल से पूछ रहे हैं बात का. दे दीजिए जी, वो आपको दे रहे हैं सर डॉक्यूमेंट, टर्मिनेशन लेटर. तो फिर ये क्यों अपने पास रखे हैं हम जब से पूछ रहे हैं? अच्छा सर, नाउ एक दिखाइए किस पेज पे है टर्मिनेशन लेटर. टर्मिनेशन किधर है? टर्मिनेशन ही हमारे साथ है. इस पेज पे. अच्छा, मैं मेंबरशिप आप पहले पेज दिखाइए ना, पेज बताएंगे. एक बात तो खत्म करें हम इसको. टर्मिनेशन नहीं है. फिर इनको हम घर भेजें अकबर साहब को कि आप हमें कॉपी है इसमें नहीं है सर. टर्मिनेशन लेटर की कॉपी वो अलग से आपको दे रहे हैं. ये ऐसा नहीं होगा ना, ये अलग से दे रहे हैं जी. हम कल पेपर बुक सर, आपने बताया था कि पेपर बुक वाइल वी आर आर्ग्यूइंग आपको पेपर आप दे दीजिए, अभी हम देख लेते हैं. पेपर बुक लग ले आएंगे. नहीं दीजिए, देखें एक चीज को खत्म करें ना बात को, फिर तो इनकी फिर आपकी केस स्ट्रांग हो जाता है. करेक्ट. बिला वजह आ रहे हैं जो पार्टी में ही नहीं है. करेक्ट सर. टर्मिनेशन कमिंग बैक. नहीं कमिंग बैक नहीं, शो अस फिनिश दिस पॉइंट. व्हाई यू इग्नोरिंग आवर क्वेश्चन? नहीं है हमारी पार्टी की. मैंने आपको भेजा था सर, वो नहीं, वो तो पुराना है ना. मैं आपको बताता हूँ कि राबिता ऐप है, हमारे मेंबर कैसे बनते हैं. सेक्शन ये पढ़ा 201. This is how members are to be followed. अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस एक राब्ता ऐप है which can be viewed on the website also before this honorable court. राब्ता ऐप में जितने भी मेंबर्स हैं वो आप क्लिक करेंगे तो सारी मेंबरशिप लिस्ट आ जाती है. उस राब्ता ऐप की जो लिस्ट है उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, वो सबके नाम आपको उसमें आ जाएगा. दे आर वोटर मेंबर्स, दे आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू If वोट. you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. सर वेबसाइट की कॉपी मैंने कहा. Website is not an evidence. No, then देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं. ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी अभी कहिए ना. आप क्या सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे आ जाइए. वी आर नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज. आई एग्री सर. अच्छा फिर आई कांट गेट द डॉक्यूमेंट्स तो आप प्रिज्यूम कर लीजिए. नहीं, अब आप दूसरी बात देखिए. मैं 209 पे आ रहा हूँ. नहीं 209 से अब आपने जो बात की है ना, 205 पढ़िए. 215 है. नहीं 205 पढ़िए जी. ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से. A member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have. You have to show. If he's not a member, show us from the record. ठीक है. That you followed things. ठीक है सर. If I can't show, तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are it will not change. conceding, if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. That On what is basis all I will we can record such a statement? That is all I You can can say my statement may be recorded that the world is That square. is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. देखिए अली ज़फ़र साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way. Is whatever is agitating my mind, I always put it बहुत forward. अच्छा है. ठीक है. I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking. The whole boils down. We don't care with these minor irregularities. We even agree with you. कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म.
یہ لوگ آئے یا تو الیکشن کمیشن خود آتا, اب یا تو کہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا یہ کبھی آپ فرنٹ مین بھی بنا دیتے نا, فلاں مسٹر آ گیا, فلاں مسٹر آ گیا, تو یہ تو ایک پرانے ورکر ہے آپ کے جو بھی فاؤنڈنگ وہ کلیم کر رہے ہیں. کل حامد خان صاحب نے کیٹیگورکلی اس کا ہی از ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس. سو 14 لوگ اگر آئے تو بھائی اتنی سی بات ہے, آپ جمہوریت تو لے آئے نا گھر میں. صحیح ہے. اچھا کمنگ بیک ٹو 209, ایک آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ آپ کے ممبرس نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں ہو گئے, مان لی انہوں نے بات. کیوں؟ تو پھر اگر مان لیے تو پیرا 11 جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے انڈر اوتھ آپ نے کہا ہے کہ دے آر ناٹ آر ممبرس. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں, دونوں باتیں میں کہہ رہا ہوں, they are not members, my statement may be recorded. آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دیں, سیریسلی There must be some evidence. آپ کہہ رہے ہیں ثبوت دیں. There must be some expulsion. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ثبوت ہے, ہم کہہ رہے ہیں کمپلائنس, شو کمپلائنس ود سیکشن 205. تو میں اس پہ اب آگے جا رہا ہوں نا سر, وہ آ رہی ہے, اگر نہیں آتی تو آپ پھر اپنا جو پرزمپشن کرنی ہوگی آپ کر لیجئے گا. میری ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مجھے انفارمیشن انسٹرکشنز یہ ہیں کہ دے ناٹ ممبرز. آپ کو کون انفارمیشن دے رہا ہے؟ دا پارٹی ہیڈ who joined the party 2 years ago. وہ ایپ سے دیکھ Shall کے we دیکھ give رہے him ہیں. more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So میرا بھی factual position سے لگا کے واپس 209 پہ آ جاتے ہیں سر. 2091 a political party shall, وہ میں نے پڑھ لیا, certificate جو contain کرتا ہے is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 میں کہیں نہیں لکھا کہ commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate آیا تو 7 دن میں certificate publish کر دینا ویب سائٹ. جناب آپ 215 پڑھ لیجیے, 215 پڑھ لیجیے, اس کو کلیئر کر لیجیے. ہاں جی بالکل ایزیلی پڑھ کے then this is the core issue whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. core issue بالکل ٹھیک ہے, اس کو بالکل core issue ہے. 2151 notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210.